think my Western karma is pretty much finished. Everyone knows English? यहाँ पर दूसरा विजिट है। प्रभु जी कह रहे मेरा नाम अखिलधर दास है और कह रहे मेरा लगभग जो पाश्चात्य देश का कर्म है शायद समाप्त हो गया है। I've been in India for about 15 years. मैं भारत में 15 वर्षों से हूँ। My service is padayatra. मेरी जो सेवा है वो पद यात्रा है। Especially, I was born in America. मेरा जन्म अमेरिका में हुआ था। And people are very much conditioned to the globalization of sense gratification in concrete prisons. और वहाँ पर what they call big cities. वहाँ पे जितने लोग हैं बहुत बद्ध आसक्त हैं इंद्र तृप्ति से पूरे विश्व के स्तर पर बड़े बड़े शहरों में जिस प्रकार से इंद्र तृप्ति होती है। There's actually the strength of the living being in the material world for the body, the mind, and even a healthy spiritual environment is with Mother Earth. एक जीवात्मा की जो शक्ति है अपने शरीर के लिए, मन के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, यहाँ तक एक अच्छा स्वस्थ संबंध रखना माता पृथ्वी के साथ। And the natural economics of the world until maybe the last 100 years, 150 years, has always been based on agriculture. और जो स्वाभाविक आर्थिक विकास की स्थिति Economy based on growing your own food with cows and with the bale, with the plow like Balaram, Akhildhara, carrying the plow. जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो पिछले 100-150 वर्ष स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें तो ये निर्भर करती है कृषि गौरक्षा के ऊपर। And Mother Nature, that's our mother. And if we're just right now, it's very, I mean, people, they don't like to talk, but raping Mother Earth, killing the babies, the women, it's all about gross, the grossest kind of abuse. तो जो प्रकृति है वो हमारी माता के समान है और भारत में खासकर अधिकतर लोग इस पर बात नहीं करना चाहते कि किस प्रकार से प्रकृति का इतना शोषण हो रहा है, एक तरह से रेप हो रहा है और बच्चों को खासकर कन्याओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है। Nobody cares for anyone, just their immediate sense gratification. As long as you make money, nobody cares. कोई किसी की परवाह नहीं करता, एकमात्र परवाह है कि तुरंत किसी प्रकार की इंद्र तृप्ति मिल जाए और जब तक धन कमा रहे हैं तब तक कोई परवाह नहीं। And that includes 90% of our devotees. और इसमें 90% हमारा भोजन सम्मिलित है। Because the mentality is there's no other way. You have to get the job, you have to get the money, you have to accept the world as it is. क्योंकि मानसिकता है कि कोई और तरीका नहीं है, किसी ना किसी प्रकार से जॉब चाहिए, किसी ना किसी प्रकार से पैसा कमाना है। And the world as it is practically like the writings on the wall. The chaos of the world because of this industrialization, this machine age, is destroying the lives
the whole planet. और अगर हम देखा जाए आज के समाज में इतना प्रकार का उत्पात है जिसका मुख्य कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन. And practically Prabhupada's discussing this on every page of the Bhagavatam, of the Gita, of every one. And we talk about it in class. But how many are really, really ready to make a serious, at least to try to think outside the box of our programming that have been given since the British? और श्रील प्रभुपाद व्यवहारिक रूप से भागवतम के हर पन्ने पर इसकी चर्चा करते हैं, गीता में चर्चा करते हैं. तो क्या हम तैयार हैं कि एक बक्से से बाहर निकलकर कुछ सोचने के लिए, एक गंभीरता पूर्वक इस दिशा में प्रयास करने के लिए, एक तो मॉडल जो हमें ब्रिटिशर्स के समय से थोप दिया गया है, या उसी में चलना चाहते हैं? हर कोई पूछता है आपकी क्या योग्यता है? My qualification is Prabhupada. Whatever qualification I have, it's Prabhupada. Yes. मेरी योग्यता है प्रभुपाद. मेरी जितनी भी योग्यता है वो है प्रभुपाद. Not this godless British, American, Western mentality. That's all. You want to study abroad, you see it on all the billboards. ना कि ये नास्तिकवाद सभ्यता, जो नास्तिकवाद जितना समाज है ब्रिटिश का, अमेरिका का या पाश्चात्य देश की जो मानसिकता है. So it's time, you know. Now Bharat is really becoming the most dominant, prominent force on the planet. Dharma is being recognized for the first time in modern history. और आधुनिक इतिहास में पहली बार भारत को एक बहुत ही शक्तिशाली फोर्स के रूप में देखा जा रहा है, जो धर्म का देश है, धर्म की पहचान की जा रही है. For the first time in my lifetime, मेरे जीवन काल में ऐसा पहली बार हो रहा है. Now the culture of Bharat is really, the people of Bharat are really beginning to take some pride in their culture, some of the knowledge of the Vedas and the culture which goes along with it. And it's a revival, and it's very inspiring for me. जो भारतीय लोग हैं पहली बार, just in the last couple of years. पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वे अपनी ही संस्कृति पर वास्तविकता से, गंभीरता से गर्वित महसूस कर रहे हैं. ऐसा लगता है कि हमारे जो भक्त हैं, like Shivaji Maharaj, that spirit for the culture and to revive it and preserve it. ऐसा लगता है हमारे भक्त बहुत धीरे हैं. शिवाजी महाराज, उनके अंदर जो जज्बा था अपनी संस्कृति को बचा के रखने का, उसको बढ़ाने का, under the Brahmanical direction of Dadaji Kondadev, and especially the influence of his mother, Jijabai. जो उनकी माता थी जजबाई, उनके प्रभाव में और उनके जो ब्राह्मणिकल जो गाइडेंस देते थे, that he could not tolerate the domination of Aurangzeb and how they, you know, how they were annihilating the whole human race, practically the standard for human beings. और वो इस बात को सहन नहीं कर पाए कि किस प्रकार से जो औरंगजेब है एक के बाद एक प्रहार करता जा रहा है संस्कृति पर, एक तरह से सभी को मारता जा रहा है. In the present society, the civilization is even worse than the Muslims now. You go to America, at least they have some sense of marriage. The Muslims, they at least have some sense of marriage and not taking intoxication. Huh? At least there's some kind of principle for worshiping God. और जो आधुनिक समाज की व्यवस्था है वो तो और भी बदतर हो गई है. अगर हम मुस्लिम में देखें तो
उनके पास फिर भी कुछ सिद्धांत है, कुछ विवाह का कंसेप्ट है, परंतु बाकी जगह तो और भी हालात गिर गए हैं। And practically today, nobody cares for anyone, just gross immediate sense gratification. Doesn't matter if you have 50 girlfriends, like these Tiger Woods and everybody. And they're glorified for it. It's considered respectable. अब व्यवहारिक रूप से हम देखें तो Isn't it? किसी को कोई परवाह नहीं है, तुरंत कोई इंद्र तृप्ति प्राप्त हो जाए। What's the example of Tiger Woods? He's got like 50 girlfriends. 50 करोड़ Girlfriends. जो टाइगर वुड्स है उसके 50 करोड़ Well, he's married. 50 गर्लफ्रेंड, दैट्स व्हाई आई वाज शॉक्ड। 50 गर्लफ्रेंड्स हैं, तो और इसके लिए उसका वाहवाही होती है। So this is the standard now, Bollywood, Hollywood. This is the university education, the result, and all the corruption. तो बॉलीवुड, goes with it. हॉलीवुड और आज का जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसका The whole system is how we become lower than pigs, lower than animals. पूरा Pigs take better care of their little piglets than we do of our children. Child abuse and killing the babies. And the women, no protection, just rape. Isn't it? This is the way it is, and everybody knows. It's very dangerous for the women. There's no protection. Nobody cares. Nobody. तो पूरा का पूरा Nobody's protesting these cinemas. Nobody's protesting this kind of godless education. And that includes our devotees. पूरा का पूरा जो प्रणाली है वो ये Especially our devotees. Just blind. वो है कि किस प्रकार से पशु के समाज से भी नीचे गिरना, एक शुकर है उसके स्तर से भी नीचे गिरना। एक जो शुकर है, सुअर है, वो अपने बच्चों का फिर भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखता है। आजकल मनुष्य क्या कर रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ के इतने केसेस हो रहे हैं, घर में ही बच्चों को हत्या हो रही है और कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा। जो नास्तिकवाद शिक्षा प्रणाली है, कोई भी इसका आगे सामने आके ढंग से विरोध नहीं करता। I mean, I understand that our leaders coming from these universities. And so we have to be, I don't know, I'm not a manager and how to make the strategy, and it is working, and we are getting many youth now, especially in India. और अगर हम देखें कि हमारे जो समाज के नेतृत्व करने वाले हैं वो ऐसी शिक्षा प्रणाली से आते हैं, तो मैं प्रभु जी कह रहे हैं मैं मैनेजर नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, परंतु भारत में बहुत से युवक लोग इस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। But I think that just recently we've just celebrated our 50th anniversary of ISKCON since Prabhupada has established this और अभी International Society for Krishna Consciousness. 2016 में To God, Krishna, Muralidhar, Radhika Raman. इस्कॉन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई जब से श्रील प्रभुपाद ने स्थापना किया था इस संस्था को। I think it's time now that we've grown up enough that we can start addressing the issue. Like a few of our devotees, especially Bhakti Prakash Maharaj, is very adamant, and he's very controversial because he's putting his head on the chopping block to get these issues on the table just for discussion of our leadership, to get back to Mother Bhumi, to encourage devotees to think outside the box that we've been programmed in for many generations. और मुझे लगता है कि हमारा आंदोलन अभी इतना मैच्योर हो गया है कि हम ऐसे मुद्दों पर बात करें। मैं जानता हूँ कई ऐसे नेता हैं जो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। भक्ति विकास महाराज हो सकता है बहुत कंट्रोवर्शियल हो, क्योंकि वो हमेशा प्रयास करते हैं कि ऐसे मुद्दों को सामने लाकर मेज़ पर रखा जाए कि इसके आसपास बातचीत हो सके। And I see now people are looking to
to Bharat. And I'm saying Bharat, not India or Hindustan. और India comes from Hindustan, from the British, from the Muslim, and the British. But Bharat means Sanatana Dharma, as far as I'm concerned. और एक Bharat is best. Bharat, not India or Hindustan. Bharat, Sanatana Bhakti is best for the human being. और एक रूढ़वादी बक्से के बाहर सोच सकें, और ज़्यादा कई लोग भारत की ओर देख रहे हैं, और मैं विशेष रूप से इस देश को भारत के नाम से संबोधित कर रहा हूँ, इंडिया या हिंदुस्तान के नाम से नहीं। जो इंडिया नाम है वो ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया। So today's verse, I think that was an introduction. तो जो आज का प्यार है, इससे पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन था। And I was thinking of the purport, and with Advaitacharya, we can do today's verse, but actually you can do it again tomorrow, because I really like to just read a little bit of the purport of text 42, and then I'd like to go back and read again the purport and verse of text 41. तो जो अभी प्यार संख्या है 42, मैं उस पर से एक अंश लूँगा तात्पर्य का, और उसके बाद जाकर जो 21 इससे पिछला प्यार है तो उसको मैं दोबारा से पढ़ूँगा, 41वां प्यार को। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I didn't even chant. Should I? I guess I should chant. We should. Now it's 8:23. My whole life has been based on the word simple, and that's what brought me to Krishna consciousness. Simplicity, simplicity, simplicity. मेरा पूरा का पूरा जीवन जो कृष्ण भावनामृत का है वो सरलता पर आधारित है। सरलता ने मेरे को आकर्षित किया। ये जो पूरा जीवन शैली है, सरलता सरलता। From the late 1800s, around in 1880s, there was a famous American philosopher, Henry David Thoreau, who is at least on the back of our Bhagavad Gita in English. His quote is there because he glorifies Bhagavad Gita. एक जो अमेरिकी दार्शनिक था हेनरी डेविड थोरो, तो उसका जो कोट है भगवत गीता पर भी हमारा प्रकाशित है। Yeah, he's known as one of the transcendentalists. That's how his philosophy is transcendentalist. उसका जो दर्शन है वो आध्यात्मिकता में गिना जाता है। And when I was a young student, I was required to read his book called Walden. Walden is a pond, a lake, where he made an experiment to live in the forest. For 2 years he lived in the forest, and he just made simple things by dead wood, and then he would sell it in the town and conquer the city or town near that forest. But he was living like a yogi. He wanted to follow like yogis, to live simple in the forest. He wanted to make experiment. तो जब मैं युवावस्था में था तो उसकी एक पुस्तक है वॉल्डन, तो मैंने वो पढ़ी थी, और उसमें उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक जगह बिल्कुल जंगल में तालाब के करीब वो रहता था 2 साल तक, और प्रकृति पे पूर्ण रूप से आश्रित रहता था। वहीं से कुछ चीज़ें बना के जो बगल में शहर था वहाँ जाके बेचा करता था। तो एक योगी की तरह वहाँ पे 2 साल तक
उसने अपने जीवन में ये एक्सपेरिमेंट किया। And I remember sitting in the, reading the book, and in the class I was looking, and there was one word that was repeated 3 times, and I underlined that word 3 times in red, and that was like in my heart. और मुझे याद है जब मैं क्लास में बैठकर उस पुस्तक को पढ़ रहा था In my heart, that word 3 times. तो उसमें एक simplicity, simplicity, simplicity. तो उसमें एक शब्द है जो 3 बार आया था, और मुझे याद है मैंने तीनों बार लाल पेन से उसको अंडरलाइन किया था, और उसने मेरे हृदय पे बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। एक तरह से मेरे हृदय पे वो टैटू बना हुआ है। वो शब्द है सरलता, सरलता, सरलता। And I remember when I was staying in the Boston temple, the devotees would sometimes go from Boston to that pond, which was now a tourist, like people would swim in this pond, this Walden pond, and it was like a place where people would go for swimming. और जब मैं बॉस्टन मंदिर में था तो वहाँ से भक्त उसी तालाब में जाते थे वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए। But on the opposite side, where they would go swimming, on the opposite side there was a big forest and trees, and there was a rebuilt cabin. They rebuilt the cabin that he had built. He rebuilt it where Thoreau had stayed for 2 years. It was like a historic place. और जब तैर के दूसरी ओर जाते थे तो बहुत घना जंगल है, और जिस स्थान पे वो रहता था उसको दोबारा बनाया गया है। वो ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। एक छोटी सी कुटिया वहाँ पे बनी है। And while the devotees were swimming, I would like to go and sit there in the woods and by that cabin. और जब भक्त लोग तैराकी कर रहे होते थे तो मैं उस स्थान पे जाकर बैठा करता था। मेरे को वो स्थान बहुत प्रिय है। Because he was an inspiration in my youth. क्योंकि मेरे He encouraged me to get back to basics, the essential facts of life. क्योंकि मेरे जीवन में वो प्रेरणा का स्रोत है कि कैसे मूलभूत सिद्धांतों पर जाकर जो जीवन के आधारशिला है, To be harmony with God, with all living beings, with nature. Live in harmony. If you're not in harmony with God and with nature, Mother Nature, and with each other as spirit souls, then how can you ever be happy? You'll be disturbed if you're not in harmony with then it's going to come back on you. कि कैसे You'll never be peaceful. You'll never have a sense of purpose and meaning in life because you won't have God in the center and each other as His family. कैसे भगवान के साथ परस्परता में रहना है, माता प्रकृति के साथ परस्परता में रहना है, हार्मनी के अंदर। तो अगर एक जीवात्मा भगवान के साथ, प्रकृति के साथ इस प्रकार की हार्मनी में नहीं है तो वो कभी खुश नहीं रह सकती। उसको जीवन में असली जो लक्ष्य है या उद्देश्य है वो कभी स्पष्ट ही नहीं होगा। You'll remain in the bodily concept of life because that's what your life is based on. Just some material comforts, और some soft cushion, like some soft chair, like Hiranyakashipu, for sense gratification, for your material sense of enjoyment, that I'm the body instead of Krishna. तब सदैव देहात्म चेतना में रहेंगे। Like the cows, with the cows, and the plow and the bale. We don't like to think of milking the cow, do we? You think about doing it yourself, or using what do you think? Well, how is your mind? How do you respond? How do you feel when somebody says, oh, maybe you should give up your job and just go live on the farm with your family? How many of you are going to be inspired? You're going to be afraid. क्योंकि जो पूरा का पूरा भौतिकवादी जीवन है वो कुछ भौतिक कंफर्ट्स पर आधारित है कि यहाँ पे देखें कुशन, सोफ़ा, ये सब सुविधा के लिए उस पर आधारित है। परंतु हम में से कितने लोग सोचते हैं कि एक सरल सादा जीवन जीने के लिए, जैसे कृष्ण बलराम जीते थे वृंदावन में,
आप में से कितने लोगों ने कभी गाय का जो दूध है खुद धोआ है, खुद निकाला है? Unless you're from the village. Unless you're from the village. And so my job is to inspire people to stay in the village and not go to Bombay and live in the slums or commit suicide because they can't pay the tractor bills. But to encourage, get back to basics, to stay, and and to encourage to stay, but with Krishna consciousness, then they can be happy, living simple, who are all still doing it, and show the example to the world. In a village, in a varnashram, in a very healthy gurukul, with gurukul, and real kshatriyas, and real vaishyas, and real families, with the earth, and with the animals, and with each other, in a community of Vaishnavas. अगर मैं आपको बोलूं कि आप अभी अपना जॉब छोड़कर परिवार के साथ फार्म पे चले जाइए, आप में से कितने लोग, हमें थोड़ा डर लगता है, परंतु मैं गांव से हूं और मैं आपको उस सरल सादे जीवन के लिए प्रेरित करना चाहूँगा जो गांव में है, जहाँ पर असली परिवार, असली संबंध के साथ रह सकते हैं, माता पृथ्वी के साथ, असली ब्राह्मण, असली क्षत्रिय, असली वैश्य, और परस्परता के साथ, प्रकृति के साथ वो जीवन जी सकते हैं. Everybody keeps talking about green is clean or something like that, but how the industry is, they're encouraging the expansion in India of industry, and well, the heaviest pollution in Delhi. They even had to shut down the industries for a week or something, isn't it? Because it was so dangerous just to breathe. तो एक तरफ इस प्रकार का प्रचलन है कि जो हरा है वो स्वच्छ है, ग्रीन इज क्लीन, परंतु दूसरी तरफ देखते हैं उसी के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया जा रहा है, और दिल्ली में अभी इतना पॉल्यूशन है कि उस पॉल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए एक एक हफ्ते 10-10 दिन तक सारी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ती हैं. इस समय है कि हम इन सब विषयों पर बातचीत करना शुरू करें. Enthusiasm and courage and strength coming from Krishna and Prabhupada. This is the heart of ISKCON, to please Prabhupada and Krishna, not for our sense gratification and adjust Krishna consciousness to fit our attachments. It's the other way around. We're meant to get free from our attachments and see how we can work on it and take practical steps in that direction. उत्साह, साहस, शक्ति के साथ इन विषयों पर बात करें जो ये हमें प्राप्त होते हैं श्रीला प्रभुपाद और कृष्ण से. इस्कॉन का जो हृदय है कृष्ण और श्रीला प्रभुपाद को प्रसन्न करना, ना कि अपनी आसक्तियों को पूरी करना आध्यात्मिकता के नाम पर. तो कुछ व्यवहारिक कदम उठाना, वास्तव में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप, और हम देखेंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो बाकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, वो समाप्त हो जाएंगे. अपने शरीर, मन, वाणी से हम क्या चीज प्रदर्शित करना चाहते हैं, हम किस चीज के प्रति कमिटेड हैं. I mean, I was thinking like this before I came to Krishna consciousness, and that's why I'm a padayatri. और मैं ऐसा सोच रहा था कृष्ण भावनामृत में आने से पहले से, और इसलिए मैं पदयात्रा में सेवा करता हूँ. Because I can see right from my childhood everything that everybody else sees, but nobody wants to accept. तो मैं बचपन से वही चीजें देख रहा था जो हर कोई देखता है, परंतु उसको स्वीकार नहीं करता. And everybody sees it, but nobody wants to do anything about it because they're not really committed. They're not really committed to their life. हर कोई वो देख, soul and the Lord, relation with the Lord and Mother Earth, and to get back to a simple, healthy Varnashram, Daivi Varnashram, which is God's way, Krishna's way. That's Sanatan Dharma.
हर कोई वो देखता है परंतु उसके लिए कमिटेड नहीं होता कि कुछ करने के लिए। explore it. तो कृष्ण भावनामृत जो सनातन धर्म है भारत भूमि में, You look at the state of Vrindavan now, with the government trying to put factories to keep tourists out of Vrindavan. That's the former political mood, and the pollution of Radha Yamuna, that the Modi is trying to do something. But with this industrialization, it'll automatically happen. और अब आप वृंदावन की स्थिति देखिए, To follow what Prabhupada's pleading for us on every page. पहले की जो सरकारी वहाँ पे पॉलिसीज थी था कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियों को वहाँ पे लगाया जाए ताकि यात्रीगण जो तीर्थ यात्री हैं वो उनकी संख्या कम हो वृंदावन में आने के लिए। अभी आके थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है, परंतु यमुना में इतना प्रदूषण है और जो वर्तमान सरकार है कुछ करने का प्रयास कर रही है, परंतु जब तक वहाँ पे इस तरह से फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगती रहेंगी तो बहुत कठिन है। So I can only speak for myself and take responsibility for my own life and what I try to achieve in this life, what my goals, and how I'm trying my best to, in my own little way, to be part of the solution in my own life and to share those principles as I've been so inconceivably gifted through Mahaprabhu and Srila Prabhupada, Lord Krishna, that I can get my own act together. मैं सिर्फ अपने लिए बोल सकता हूँ, अपने जीवन के लिए बोल सकता हूँ कि मैं किस चीज़ के प्रति कमिटेड हूँ या मैं किन सिद्धांतों का पालन करता हूँ जो अचिंत्य रूप से कृपा के रूप में महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद के द्वारा मुझे प्राप्त हुए हैं और उनको मैं कैसे अन्य लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। It's time to rewrite my database, my subconscious, my way of thinking and feeling and acting, and act according to Guru, Sadhu and Shastra. और ये समय है कि जो अपने मन को मैं प्रशिक्षित करूं, अपने मन के अंदर जो अलग अलग गणनाएं हैं उनको ठीक रूप से लिखूं दोबारा से गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। To get in harmony, in tune with Krishna and the way he likes to live, that we want to live the way Krishna likes to live, with the cows and the flute, and not this Hollywood. और अपने जो जीवन है कृष्ण के साथ हार्मनी में मैं कैसे ला सकता हूँ। हर कोई पसंद करता है जैसे कृष्ण की जीवन शैली थी, गांव में बछड़ों के साथ, गायों के साथ, अपनी वंशी के साथ। And his devotees. This is natural way for the soul. This is the natural happiness. These loving relationships with each other, with Krishna. That's natural. It's our normal, healthy. जहाँ पे गोपियाँ सदैव प्रतिदिन सुबह दही मतने समय कृष्ण का स्वाभाविक रूप से गुणगान कर रही हैं, तो ये जीवात्मा की प्राकृतिक स्थिति है। ऐसा सरल जीवन में जीना जो कृष्ण के गुणगान पर आधारित हो, गाय बछड़ों के इर्द गिर्द घूमता हो। प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा बोलिया समय निकलता जा रहा है। But especially here in Punjabi Bagh, this temple is famous for caring for others. विशेषकर ये जो मंदिर है पंजाबी बाग अन्य के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा केयर कैसे करना है इसके लिए प्रसिद्ध है। So if any place I could speak about this, I think this is the best place, maybe even on the planet, where I can at least throw this out. तो कोई भी जो स्थान which is here, which we're reading. तो जितने भी स्थान है जहाँ पर मैं इन विषयों पे बात कर सकता हूँ, मुझे लगता है पंजाबी बाग सबसे अच्छा स्थान है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे आइडियाज़ को आपके समक्ष रखूँ। But everybody says
It's not practical now. It's not practical. How can we do this? No, it's not practical. हर We कोई have to support the demons in this whole cow killing, baby killing, Bollywood society. We have to support it. We have to get our money supporting working for these demons and using most of our energy to just live in a little box, paying so much rent, and we have to work like an ass just to keep our body and for our families, instead of living naturally and with a very simple. You can grow your own food. You don't have to buy it. परंतु जब भी ऐसे बात करो तो हर किसी का पहला रिएक्शन होता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है, और हमें जिस जगह रह रहे हैं वहीं पे वैसी जीवन शैली में रहना होगा, उसी को सपोर्ट करना होगा, वैसी जॉब पे जाना ही होगा. Anyway, it's an interesting subject to think about. I think it is. I think it's worth thinking about. ये एक बहुत रुचिकर विषय है, इस पर Seriously thinking about it. इस विषय पर विचार करना, मुझे लगता है कि ये एक हकदार है ये विषय कि इस पे विचार परामर्श किया जाए. To think about how to apply practically what we're being instructed to. इस बारे में विचार करना है कि कैसे व्यवहारिक रूप से हम इसको लागू कर सकें, जिसके लिए हमें निर्देश मिल रहे हैं कृष्ण और श्रील प्रभुपाद के द्वारा. Then we can develop some maybe positive inspiration coming from Krishna and Prabhupada to take practical action, willing, thinking, feeling, willing. कम से कम इसके बारे में विचार कीजिए, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कृष्ण के द्वारा कि इसको हम कैसे व्यवहारिक रूप से इसको लागू कर सकते हैं. पहले सोचना और फिर इच्छा होगी और फिर वैसे ही फीलिंग होगी. To use our knowledge acquiring senses and our working senses, 5 working senses and 5 knowledge acquiring senses. We're conscious beings, and that means thinking, feeling, and acting. We have a body. Because of material mind, we have a material body, and how we can change that materialistic mind into a spiritually connected identity with Krishna, with our eternal swarup, so we can live in Vrindavan with Krishna and the cows and Madhya Yashoda and the gopis and the cowherd boys and the peacocks and the parrots, instead of like this. We've got to have a little park just to have some superficial mode of goodness around us to protect us from all the concrete rats and crows and pigeons. हम जीवित चेतना जीवात्मा है. हम 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों से जो भौतिक शरीर है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से. तो विचार करना, फिर महसूस करना और फिर व्यक्तिगत प्रैक्टिकल रूप से करना कि कैसे मैं कृष्ण की तरह वृंदावन जीवन को अपना सकता हूँ, कैसे वो जीवन शैली को जी सकता हूँ, और फिर हम देखेंगे कि सतोगुण भी हमारी रक्षा करेगा इस पूरे के पूरे कंक्रीट जंगल से. When we put God first, Krishna first, then automatically all the needs and all the health of our children, and we can actually learn to like Krishna, to want to live with him like he lives, with the cows in the forest, with the village and the people. This is very nice. I go in the villages and the people are so much more, so much simplicity, so much nice. जब हम गुरु और कृष्ण को जब हम गुरु और कृष्ण को प्राथमिकता देंगे, उनको पहले रखेंगे, तब देखेंगे हमारे जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी. हमारे जो बच्चे हैं उनका अच्छा स्वास्थ्य होगा. जब भी मैं गांव जाता हूं तो देखता हूं वहां पे जो लोग हैं बहुत ही मिलनसार हैं और बिल्कुल उनका जीवन सादगी, सरलता पर आधारित है. So I'm going to actually, I think time is, I should do some chanting. We should chant.
Jaya Radha Madhava Punjabi Hari. Gopijana Vallabha Givaradari. Yashodanandana Brajadana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Punjabi Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Utsaha, determination is required from the heart. This is required for bhakti from the heart with commitment. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Bolo! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Bolo, chant loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Vishpad Paramahamsa Privadikacharya Shishimad, His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Vishpad Paramahamsa Privadikacharya Shishimad, His Divine Grace, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Kota Vaishnava Vindi Ki Jai. Premsako Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai, Mathura Dham Ki Jai, Mayapur Dham Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Harinam Sankirtan Ki Jai, Transcendental Book Distribution Ki Jai, Transcendental Vasadam Distribution Ki Jai, All India Padayatra Ki Jai, and Punjabi Bagh, ISKCON Radhika Raman Mandir Ki Jai. Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. And all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Srila Prabhupada. All right now. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So today we're just going to introduce tomorrow's verse, which is actually today's verse, text 42, and we're going to, then I'll read the previous verse and purport, the full purport of text 41. आज हम 42वां जो प्यार है उसकी सिर्फ भूमिका देंगे और उसके बाद 41वां प्यार को हम पढ़ेंगे. So because we only have 6 minutes before 9 o'clock. सिर्फ 6 मिनट बचे हैं 9 बजने में. So I think I will just do the Bengali and just quickly read the purports. तो क्योंकि समय कम है सिर्फ मैं प्यार पढ़ूंगा और उसके बाद मैं ही अनुवाद तात्पर्य पढ़ लूंगा. So Nityanande Agyadila Ya Gaudadeshe Anargala Prema Bhakti Kariha Prakashe. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered Nityananda Prabhu, this is translation and purport by Srila Prabhupada. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered Nityananda Prabhu, go to Bengal and without restriction manifest devotional service to the Lord Krishna consciousness. अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद. तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दिया, बंगाल जाओ और बिना किसी प्रतिबंध के कृष्ण भक्ति अर्थात कृष्ण भावनामृत का प्राकट्य करो. So I think maybe you should just read the purport only up to chapter 9, text 32 of Bhagavad Gita. In the purport, it's just the very beginning. इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया कि सारे बंगालियों को भक्ति प्रदान करें. भगवत गीता में भगवान ने कहा है, माम ही पार्था व्यपाश्रित्य ये पीस्यु पापयोनया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम. हे पृथा पुत्र, जो मेरी शरण में आते हैं वे भले ही निम्न जन्म वाले स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं. जो Okay.
The rest is about how we shouldn't take it cheaply and become just like Prakritiya Sahajiyas. जो भी So, I think you can discuss that tomorrow. And today, I'd like to focus on that part of the purport with this text 41. Acharya re agyadila, Acharya re agyadila karya samana, Achandala adi Krishna bhakti diyodhana. With great respect, Sri Chaitanya Mahaprabhu requested Advaita Acharya, give Krishna consciousness, devotion to Krishna, even to the lowest of men, chandalas, तो जो like me. तो जब 42वां प्रयास उसका जो तात्पर्य है, तो उसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा, जो कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है, नियमों का पालन करता है, वह भगवत धाम वापस जाता है। तो बचा हुआ तात्पर्य प्राकृत सहज्या के ऊपर है, जो हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। अभी 41वां प्यार का अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत सम्मान पूर्वक अद्वैत आचार्य से प्रार्थना की, आप अधम से अधम व्यक्तियों, चंडालों को भी कृष्ण भक्ति रूपी चेतना प्रदान करें, जैसा कि मैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह आदेश उनके सभी भक्तों के लिए है। कृष्ण भक्ति हर एक के लिए उपलब्ध है, यहाँ तक कि चंडालों जैसे अधम लोगों के लिए भी। श्री अद्वैत तथा नित्यानंद प्रभु से आगे चलने वाली परंपरा में इस आदेश का पालन हमें करना चाहिए और बिना भेदभाव के विश्व भर में कृष्ण भक्ति का वितरण करना चाहिए। ब्राह्मणों से लेकर निम्नतर स्तर के चंडालों तक के मनुष्यों के विभिन्न प्रकार हैं। इस कलयुग में हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दिए जाने की आवश्यकता है, चाहे वह किसी भी पद पर स्थित क्यों ना हो। यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की वेदना का अनुभव हो रहा है, यहाँ तक कि अमेरिकी सीनेट में भी संसार की दुर्दशा का अनुभव किया जाता है, जिसे 30 अप्रैल 1974 का दिन प्रार्थना दिवस के रूप में नियत कर दिया गया है। इस तरह हर एक को समाज में अवैध संबंध, मांसाहार, जुआ तथा नशा करने से उत्पन्न हुई कलयुग की दुर्दशा का अनुभव हो रहा है। अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य विश्व भर में कृष्ण भक्ति का वितरण करें और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करें। महाप्रभु ने हर एक को गुरु बनने का आदेश दिया है। हमारा आज्ञा गुरु है तारा यही देश। प्रत्येक नगर तथा प्रत्येक गांव के हर व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से आलोकित किया जाना चाहिए। इस तरह समूचा विश्व शांत तथा सुखी बनेगा और हर व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गान करेगा, जैसे कि उनकी इच्छा है। चंडाल शब्द का अर्थ है कुत्ता खाने वाला व्यक्ति, जो मनुष्य में सबसे निम्न माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के वरदान से चंडाल भी कृष्ण भावनामृत का लाभ उठा सकता है। कृष्ण भक्ति किसी एक जाति की बपौती नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए इस महान वरदान को कोई भी प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति को इसे प्राप्त करने तथा सुखी बनने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस श्लोक में आया दान शब्द भी महत्वपूर्ण है। जो भी कृष्ण भक्ति के वितरण में लगता है वह दानी व्यक्ति है। पेशेवर लोग धन के बदले श्रीमद् भागवत सुनाते हैं और कृष्ण भक्ति की चर्चा करते हैं। वैसी उच्च दिव्य संपत्ति का वितरण हर किसी को नहीं कर सकते। केवल शुद्ध भक्त ही, जिनका ध्येय केवल कृष्ण सेवा है, दान के रूप में ऐसे दिव्य अमूल्य वरदान का वितरण कर सकते हैं। तो अभी 9 बज गए हैं। किसी का कोई प्रश्न? Say it better than Prabhupada. हरे कृष्ण। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बहुत अच्छी कथा के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन ये था, जैसे सरलता के बारे में प्रभु जी बता रहे थे, तो सरल व्यक्ति तो क्या भगवत धाम जा सकता है? अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है और भगवत भक्ति नहीं करता है और सिर्फ सरल है और भक्ति नहीं करता है, तो क्या भगवत धाम जा सकता है? Is asking or speaking about simplicity.
So if someone is not a devotee but he lives simply and he is a simple person in life, can he go back to Godhead? To live in a place, you have to have this. You have to have the same quality of the persons who live there. किसी जगह में रहने के लिए आपके पास वही गुण होने चाहिए जो वहाँ समाज में उन लोगों के पास है. Even in the material world, you find people who have Chinese kind of karma. They have a similar mentality from their previous life, and they take birth accordingly. भौतिक What kind of species you get? The crows associate with the crows, with crow bodies. The swans, they also associate with the lake. They go to the pure lake, a clear lake, clean. The crows are in the garbage. भौतिक Birds of a feather flock together. संसार में भी देखते हैं कि कैसे अगर आपका चाइनीज कर्म है, आपका जन्म वैसे देश में होगा, जिस भी जैसा भी कर्म है उस योनि में आप जन्म लेंगे. आप देखते हैं जो हंस हैं वो भी सारे समूह में एक साथ रहते हैं. तो जैसा आपके कर्म है या जैसे आपकी मानसिकता है उस प्रकार से आपका किसी योनि में जन्म होता है. I mean, you're still looking for sense gratification. If you're not thinking of the Lord and trying to become His loving devotee, that means you're still just looking for your own enjoyment. How can you go back to the spiritual world? अगर आप कृष्ण भावनामृत नहीं हैं तो आप भगवान के बारे में नहीं सोचेंगे. आपका जो मानसिकता होगी वो इंद्र तृप्ति की ही होगी. तो आप क्या भगवत धाम कैसे जा सकते हैं वापस? I mean, the Mayavadis, they can't live with Krishna. Even if the rare persons are able to merge in Brahman, even they're following very strictly all these principles of no meat eating, no gambling, तो यहाँ no तक intoxication, no illicit sex, no sex. तो यहाँ तक कि मायावादी भी कृष्ण लोक तक नहीं जा पाते. उनमें से कोई गिने चुने लोग हैं जो ब्रह्म ज्योति तक पहुँच पाते हैं और वो बहुत कड़ी तपस्या कर रहे होते हैं, 4 नियम कठोरता से पालन कर रहे होते हैं. तो जब वही नहीं जा पाते तो बाकियों की तो बात. Well, they'll never know the loving relationship with the Supreme Personality of Godhead, with that beautiful Satchidananda Vigraha form, because they don't accept it. उनका जो सच्चिदानंद जो कृष्ण का स्वरूप है उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं होता Mayavadi. क्योंकि वो उस रूप को स्वीकार ही नहीं करते. That's those rare persons who are real Mayavadis, and there are maybe one on the planet, maybe 10 or, you know, real Mayavadis. कोई बहुत ही विरला उनमें से भी व्यक्ति है जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाता है. So you have to be a bhakta to get bhakti, and only bhaktas are in Vaikuntha with Krishna on the Vaikuntha lokas, and let alone Golok, where they're the most intense and attached to Krishna, the most intense, and loving Him and wanting to be with Him and serve Him in their different relationships. तो सिर्फ भक्त ही वापस भगवत धाम जा सकते हैं भक्ति के माध्यम से. और गोलोक वृंदावन में जहाँ पे तो भक्ति की प्रगाढ़ता है. You're asking this question means that you're not really reading these books. आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं मतलब आप वास्तविकता में श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहे. You're not reading Krishna book or Bhagavatam. आप कृष्णा बुक नहीं पढ़ रहे या भागवतम नहीं पढ़ You रहे. have a Brahmin thread. आपके पास जनेऊ है. You'll only be able to speak what you hear about, what you want to hear about, and that will come out. What you're intensely absorbing, and you're learning, and you're hearing. You hear about Krishna, and then you'll speak about Krishna, and you'll see everything in the universe, spiritually and materially. You'll see everything from Guru, Sadhu, and Shastra. That is Brahman. तो जो आप पढ़ोगे, And that is a real Kshatriya and Vaishya who are initiated. जो आप एब्जॉर्ब करोगे वही बाहर निकलेगा. जितना हम कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, कृष्ण सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, वैसा प्रदर्शित होगा. और वही ब्राह्मण का असली अर्थ है. They live a life with their body, words, and mind. They live a life param tattva, the perfect truth. Everything they do and speak will be. They can refer to the Shastras.
अपने मन शरीर वाणी से जो ब्राह्मण तत्व है उसके हिसाब से जो वो जीवन जीते हैं Vaishnava. कृष्ण को समर्पित होकर, It's the most responsible position to guide the society. ये सबसे जिम्मेदारी का पद है ब्राह्मण का, पूरे समाज को सही दिशा दिखाना। Government, the Kshatriyas, it's the Brahmins who are meant to advise. तो क्षत्रियों को भी जो सलाह देते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। And then some of our children will be the Kshatriyas and the Vaishyas, and we can have like Vrindavan communities with Vaishya communities, but that's Krishna. He's a coward boy. हमारे जो कुछ बच्चे हैं वो क्षत्रिय हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, और तब हम वृंदावन की तरह समुदाय बना सकते हैं। And the whole society, the whole Daivi Varna, the whole world, our lives will get, the world will get transformed as we transform our own lives. पूरा का पूरा And then others will be influenced by that. विश्व ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अगर हम अपने आप खुद में परिवर्तन करें। It's an individual, personal commitment. I can't take responsibility for you. I can only take responsibility for the quality of my own life and actions. ये एक व्यक्तिगत Principles that it's based on. कमिटमेंट है, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति दूसरे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकता है। If you want to know that relationship and experience that connection to Krishna, to the degree you apply these principles, to that degree, mame viye prapadyante tamstataiva margamya ham mamavarano vartante manusya partasarasha. As they surrender to me, I reward them accordingly. All of them follow my path in all respects. The biggest demons and the most surrendered devotees, and in between, everyone is under Krishna's. ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितनी मात्रा में हम कृष्ण के द्वारा गए सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में लागू करेंगे, उतनी आत्मीयता का संबंध हम कृष्ण के साथ महसूस अनुभव कर पाएंगे। And according to your desires and attachments and what you really want, you're attached to him, sold out, he'll reciprocate with you accordingly every day. He'll help you get back. He'll give you so many interesting experiences, very much, maybe no pain, no gain, you know, to really exercise your spiritual muscles and thinking and actions to change. It's not so easy. और आपकी इच्छाओं और आसक्तियों के अनुसार कृष्ण आपके साथ भी आदान प्रदान करेंगे। आप कृष्ण के साथ आसक्त हैं तो कृष्ण भी उसी प्रकार से आपके साथ प्रदान करेंगे। We can try ourselves and then around us live, speak and live like that. Encourage others with patience but also with enthusiasm to see how we can change for the better. तो हो सकता है बहुत आसान ना हो, परंतु with these principles as our guiding light in our lives. जो इन पुस्तकों में जो सिद्धांत दिए हैं ये हमारे मार्गदर्शक हैं। इन सिद्धांतों के हिसाब से अपने जीवन को ढालना। And actually Krishna, to hear and chant about him and his devotees and Prabhupada and so many wonderful devotees in this movement and their biographies, Prabhupada's biographies, so many devotees. So it's so available, more now than when much more Prabhupada's available now with all the videos, books. और श्रील प्रभुपाद के इतने सारे वीडियोस, उनकी बायोग्राफी इस समय उपलब्ध हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। But we also always must see how we have Prabhupada. I live in my books and my followers live with me, that we, no matter how much we can talk about Krishna Leela with the Goswamis and Bhakti, that's nice, that we can, after many years of purification, we can get some higher taste, but always to keep that connection with Prabhupada, hearing from him regularly, daily, always to keep that connection within our, you could say our treatment, this Bhakti Yoga treatment, श्रील प्रभुपाद के साथ
अपना जो संबंध है उसको सदैव बनाए रखना। हो सकता है हम अलग अलग कृष्ण की लीलाएं पढ़ रहे हो, अलग अलग और चीज़ें पढ़ रहे हो, परंतु जो प्रभुपाद के साथ संबंध है, उनके तात्पर्यों को पढ़ना, उनके प्रवचनों को सुनना, उनकी वीडियोस को देखना, उनके साथ जो व्यक्तिगत संबंध है उसको हमेशा बनाए रखना। So you asked me about simplicity, you know, if we're just simple, so I kind of elaborated. Any other questions? I mean, our time is now 12 after 9. What's the program? It's prasadam time. किसी का कोई और प्रश्न है? I'm asking if anyone has any question. किसी का और कोई प्रश्न है? So are there any comments? Anybody can make any comment? किसी का कोई about how टिप्पणी? they feel about these ideas? किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है? Everything begins with an idea. हर चीज की शुरुआत एक आइडिया के साथ होती है। Hare Krishna Prabhu, thank you so much for a very wonderful lecture. By the concept of Vaishnavism, a Vaishnava doesn't want to lead, and then he also has to lead because he has to lead the society. So it's very difficult for the devotees to be a servant and then lead. It's a fundamentally difficult situation. But it's difficult to surrender to Krishna because we're against it. Our mind is programmed. That's why it's difficult. That's why it's difficult. The simple process of living, and it's just to hear and chant about Krishna, but we don't like it. Our mind. We're identifying with our mind instead of with Guru. We're identifying still with our old ways of thinking and feeling. And we accept our mind as our Guru and not Krishna through Prabhupada. To realize our relationship, we're not serious because we're still identifying with our enjoying spirit. We still want to enjoy in the name of Krishna consciousness. Practically, we're Karmakanda Bhaktas, mostly. And we'll come back again and again and again until we get tired. That enjoying spirit is very deep. And when we get tired of living in a rat race, a dog-eat-dog world, and just accepting it, I'll die before I accept it. I never die. Krishna always takes care. I went by walk from England to the Arctic Circle in 1975, just thinking in a world full of corruption. And I wouldn't do it. And I just surrendered, and I found Prabhupada's books in Norway. Somebody picked me up on the highway, and I went to his house, and he had Prabhupada's Gita and Prabhupada's Krishna book. And I memorized from George Harrison's Words from Apple in the introduction of Krishna book, the Mahamantra. And I was chanting on the streets of Amsterdam a week later. And then there was a poster on a brick wall for a youth hostel. And 3 doors before that youth hostel, or a cheap place, because every place was full with tourists, $200 for a night to sleep. And I wasn't going to pay that. I didn't have that kind of money to spend, $200. So then I was chanting for guidance. And how Krishna, just before that youth hostel was the picture of Radha and Krishna, the same picture in a poster in the window. And it was a temple. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु जी का प्रश्न था कि वैष्णव स्वभाव से विनम्र होता है, नेतृत्व नहीं करना चाहता, परंतु उसको समाज को नेतृत्व भी करना है। तो प्रभु जी ने अपने जीवन का अनुभव शेयर किया और शुरू में बताया कि कैसे मन के साथ जब व्यक्ति पहचान करता है तो गलत धारणाएं बना लेता है। और प्रभु जी ने अपना स्टोरी बताया कि कैसे वो एक व्यक्ति से उन्होंने लिफ्ट मांगी, उनके घर पर गए, वहाँ पे भगवत गीता और कृष्णा पुस्तक थी, और कृष्णा पुस्तक में जॉर्ज हैरिसन का जो प्रीफेस था, जिसने मैसेज लिखा था, उसको उन्होंने याद किया, उसमें महामंत्र था। और फिर एम्स्टर्डम की
सड़कों पर उस मंत्र का जप कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। With that commitment to find God in His way, without all the corruption in the name of democracy and religion and government, I saw the result was all cheating, and I'm not going to be like that, and I have to find His way, and He guided me, and He protected me, and He does. As we really commit ourselves, and He'll reciprocate to the degree we do. He does reciprocate with everyone. और अगर He will give you material facility if that's what you're praying for. There's Dharma art, there's art to RT, you know, and and curious, and those who are really in knowledge, who want knowledge of God and want to get with Him and have no other purpose. They're the most dear, but all of the devotees are dear to Krishna, including the materialistically motivated. Everyone is dear. भगवान को प्राप्त करने के लिए उत्साह होगा, कमिटमेंट होगी, भगवान के तरीके से भगवान निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेंगे। और अगर हम कोई भौतिक सुविधा चाहते हैं तो फिर भगवान उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट करेंगे। Everyone is dear, but those who are most dear are those who have no other motive, and that's the core of ISKCON. Prabhupada, his quality, we get it from him, from these books, from so many videos and audio. He's so many. He's the first acharya to ever that we can see him, hear him. So many books, isn't it? He's the first by Mahaprabhu's arrangement. We have so much access to Prabhupada and his mode, and we can culture that mode if we act on it with going out, book distribution, and Harinam and Prasadam, to really, really try to change. And automatically, as our mood is like that, we'll be changing our own heart as we're trying to become compassionate like Prabhupada. Practicing it, acts of compassion, you'll become like that. And you will get so much inspiration from Krishna in the heart. But you'll have to struggle to change the mind. महाप्रभु की कृपा से हमारे पास श्रील प्रभुपाद का एक्सेस है, उनका जीवंत उदाहरण है, और हमें जो उनसे शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं उनको अब जीवन में उतारें, परंतु उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। But how Prabhupada inspired that in us because of his love and our desire to please him. And what he was saying made sense. And so that's how this movement, you can see the Hare Krishna movie and read the biographies, a practical manifestation of the Bhagavatam and the Chaitanya Charitamrita now. आप हरे कृष्णा मूवी देख सकते हैं और हम देखेंगे भागवतम चैतन्य चरितामृत में जो भी प्रभुपाद ने लिखा है वो सब सत्य हो रहा है आज के समय में। Not just for Maharashtra and India, like Shivaji Maharaj did with Ramdas Swami and Tukaram as his gurus. Against the whole Muslim empire, just one person, and now Prabhupada, one person. And then with the hill fighters like us from New York, Prabhupada enlisted us, the monkeys on the streets of New York. And he turned us into devotees. तो हम देखते हैं जैसे महाराष्ट्र में With this speaking, Prabhupada turned us to Vaishnavas. And those who were able to, the few who were able to actually stick with the principles, you can finish it in this life if you really stick with it every day and surrender to hearing and chanting, reading these books for the spiritual intelligence and strength, and to subdue the mind, which is very strong. We can subdue it with Krishna. कैसे श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तक कि न्यूयॉर्क से सड़कों से लोगों को उठा के अपने सेना में भर्ती किया, और अगर हम इन सिद्धांतों को पे अटल रहते हैं, प्रतिदिन शरणागत होते हैं, तो आप इसी एक जीवन में वापस भगवत धाम जा सकते हैं। और धीरे धीरे जितने भयावह repeating the message, and that's what you're absorbed in Krishna.
You're hearing and then you're speaking, you're remembering. This is completely changing your mind database. Program to Krishna program. Krishna's program. धीरे धीरे जितनी चीज़ें हैं मन शुद्ध होगा और मन में जितनी भयावह चीज़ें वो समाप्त होंगी अगर हम जो कृष्णा के द्वारा जो कार्यक्रम दिया है उसको अटलता के साथ पालन He is the source of inspiration. Inspired means in spirit. तो वो प्रेरणा के स्रोत हैं And she's the spirit, the Shaktiman. He's the Param Brahman. He's the absolute truth. He's the power source. He's the Shaktiman. He's controlling all the power, all the energy. Krishna with the flute. और वो परम सत्य हैं वो शक्तिमान हैं He's the supreme mystic, Yogeshwar. वो योगेश्वर हैं So Yogeshwar, what is it? Tatra, Yogeshwara, Krishna, Tatra, Parto, Dhanurdara, Tatra, Shir, Vijyo, Bhutir, Juvanitir, Matir, Mama. Wherever there is Krishna, the supreme mystic, and Arjuna, the supreme archer, there will certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. तो भगवत गीता का आखिरी श्लोक है जहाँ भी भगवान कृष्ण होंगे जहाँ पे धनुर्धर अर्जुन होंगे वहाँ ये चार चीज़ें उपस्थित रहेंगी So the Bhagavatam begins where the Gita leaves off. जहाँ गीता समाप्त होती है वहाँ से भागवतम प्रारंभ That's होता है the last verse of Bhagavad Gita. जो आखिरी श्लोक है भगवत गीता का And then with the Bhagavatam you can go deep to develop attachment and attraction to Krishna. Krishna book. और भागवतम में आप और गहराई में जा सकते हैं कृष्ण बुक It's actually the commentaries of the Acharyas more than the Bhagavatam. So we get like the philosophy of the 9 cantos with the Krishna book. तो कृष्णा पुस्तक पढ़िए भागवतम पढ़िए जो Read दर्शन it 84 times, Charles, really, averaging 2 times a year, 6 months. Well, in addition to my reading of other books and like Bhagavatam and Chaitanya and small books and biography books and so as a supplement, like a reading syllabus like in school, not just reading one book, but I like to read so many pages of the Bhagavatam, 14 pages, and then other books to supplement it. तो जैसे स्कूल में सिलेबस होता है करिकुलम होता है तो मुझे पसंद है कि मैं कई सारे पुस्तकों को पढूं Very sweet, like having the sweet, and you have the sabji and the rice down with the purports and the Sanskrit. And these books as my main prep, and then to get Shakti for preaching, and then the other books for sweets like Lilamrita. तो जैसे कि पूरा का पूरा भोजन होता है सब्जी दाल चपाती तो उसी प्रकार से हम ये पुस्तक देखें यहाँ तात्पर्य है संस्कृत है शब्दार्थ है ये मेरा मेन आहार है जिससे मुझे शक्ति मिलती है प्रचार करने की उसके बाद से having that bhakti shakti like Shivaji Maharaj did. He got the bhakti shakti, surrendered to Tukaram and his practical guru Ramdas Swami. I know this stuff because I want to be inspired. I'm inspired by this, by him and his example just 400 years ago. तो फिर भक्ति शक्ति प्राप्त हो गई Not 5,000 years ago, and he was like a human being, but very powerful person. Not like the Pandavas; they were born from demigods, and they had so many Shakti weapons. Our Shakti weapon is prasadam, the holy name, and these books. तो हमारा जो शक्ति वेपन है वह है प्रसादम पुस्तकें हरि नाम Books are the basis, purity is the force, preaching is the essence, and utility is the principle. We have to be practical also. प्रचार ही सार है पुस्तकें आधार है और प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल But without that vision of our purpose, and everything we do
is to see that purpose. Both in our own individual life and our personal Krishna consciousness, that we keep acting in a way that we're going to get Krishna. Every day we take the treatment of the doctor. We take the dose, the diet, the exercise, when that means going out and practice it, and experience the benefit and the result. Then you know this is reality. This is the reality. Everything else is just useless. तो जीवन का जो दृष्टिकोण है, पर्पस है, उद्देश्य, उस हिसाब से जीना. It's been very nice, inspiring. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद Sangha. प्रेरणा संघ के लिए. So each of you, if you can even get a drop and then be able to share that with others, because you will be sharing whatever your mood is, whatever your purpose is, you will automatically be sharing that with persons who have contact with you and who are around you. जो भी आपको जीवन का उद्देश्य You will होगा, automatically affect others by your own consciousness and your own purpose. आपकी जो Automatically. चेतना होगी, आपके जो उद्देश्य होगा, उसी प्रकार से आप अन्य को प्रभावित करेंगे, स्वाभाविक रूप से. We have to become conscious आपको कृष्ण भावनामृत बनना है. about our thoughts and our purposes, and then we can apply ourselves, become Krishna conscious, thoughtful, to change our minds. Set. We have to be honest and to see how we have to change. विचारशील बनना, ईमानदार बनना कि कैसे अपने आप को बदलना है. And our purpose. That's commitment to our lives, real commitment to our lives. It begins here, not with guru, it begins with your own life, to care for your own self, the best you can do and achieve for your own life, and you'll share that with others. Begins here, each one of us. That's all we have is our life. It's up to us what we're going to do with it. And Krishna will reciprocate with so much love and patience, always, and encourage us also, especially when we're really committed to revive our love for Him. Even though we have no idea what that is, that we want to get it because we don't like our disease condition. And He'll help us make progress and with His presence in different levels. He reveals Himself gradually in different ways, so many ways. तो हम पे निर्भर करता है कि कितने ईमानदारी से हम वो प्रयास करते हैं. Please forgive me. I'm trying to be time conscious. Please forgive me because actually it is blood. It's all right. Yeah, very good. श्रीमद् भागवतम की, श्री चैतन्य चरितामृत की, हिज ग्रेस अखिलधर प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे. I'm just a simple soul trying to realize what it means to be a simple soul, as a simple brahmachari, not some big Prabhupada disciple, just to learn what it means to be a simple soul. Trying to get it right this time around this life, trying to finish up, correct my foolishness of ever leaving Krishna in the first place, becoming such a fool. Now to really try to change and be willing to struggle. I have to. I have to. I know too much what this world is. I can't go on like that. I'm already dead.
I'm already dead. Even before I knew God was Krishna, I couldn't live like that. And I just hit the highway. And Krishna, and Prabhupada, and Bhagavad Gita, and Prabhupada, and Krishna book in that house in Norway. And I memorized the Maha Mantra. I was so inspired. Singing songs like, My Sweet Lord, I really want to know you. And I embraced George in Vrindavan before he died in 1997. In Vrindavan, he was there for a week. And I thanked him for that song, My Sweet Lord, was my prayer on the highway. I want to know you. I really want to go with you. Please guide me, protect me, guide me, show me the way. Huh? That's the mood. And Prabhupada instilled that in George. And he got that message out to the people through his music. And he's still doing it. And even though he still has maybe some habits, but Prabhupada, he got special mercy because of his surrender to the mission and the spirit of Prabhupada. And he put his life on the chopping block, coming out as a Hare Krishna, when it was exactly the opposite that was popular. And now he's famous as the spiritual Beetle. Because of Prabhupada and Krishna Mahaprabhu. We can also
Hare